Guys, very good evening to all of you. I hope you guys are in the best of the shape, mentally, physically, spiritually, emotionally. It's an important discussion, so I want you to pay attention to what I'm going to say. Also, stay in your senses. Don't chat among your friends. You have all the time in the world to chat. Lastly, lastly, be honest, because honesty has always been an important ingredient, and above all, would request all of you to switch on your videos. I think इतने सा अब 2-3 महीने बाद 3-4 महीने बाद you guys have to go into college. So मुझे नहीं हम लोग साथ बैठ के बियर पियेंगे. So I think. Excuse me, sir. Yes, Manya. सर मैं प्रतिभा और प्रतीक साथ में हम साइकिलिंग कर रहे हैं. आप प्रतिभा और प्रतीक साथ में और साइकिलिंग कर रहे हो. Yes, तो sir. साइकिल चलाते चलाते लेक्चर लगा रहे हो. सर अभी रोकिए साइकिल. तो रोक लो, वीडियो ऑन कर लो. वीडियो में साइकिल हम भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम साइकिल नहीं छीन पाएंगे आपकी, डोंट वरी. और कोई भी आपकी साइकिल देख के आपको चढ़ाएगा नहीं, मेरी गारंटी है. गुनगुन, अब मोदिनी अदानी आई है क्या? बताइए देख के मुझे प्लीज. नो सर. चलो कोई बात नहीं. गुनगुन एक बार उनको मैसेज डाल देगा, तेरी उनसे बात होती है तो. कार्तिक क्या दिख रहा है मुझे? कार्तिक क्या, आर यू देयर? कार्तिक का आई थिंक कार्तिक नहीं है सर. उसका सूटा ब्रेक चल रहा होगा. Okay, guys, very good evening to all of you. It's important, so no more jokes for the next. I'll try to not crack any jokes. Now, having said that, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अपना WhatsApp बंद करने दो, so that because messages आई जा रहे हैं. Okay, now I want you to pay attention, guys. This is important. How many of you are presently satisfied with your marks in term 1 examination? I repeat my question. How many of you are pleasantly satisfied? Now, I want you to understand what I'm asking you. Pleasantly satisfied का मतलब है कि आपने जितना एफर्ट डाला, जितना आपका फोकस था टर्म 1 पे, उस हिसाब से बोलना है. ऐसा नहीं होनी चाहिए कि टर्म 1 पे हमारा फोकस नहीं था, वी वर फोकसिंग ऑन जेई एंड हमारे मार्क्स 2-3 नंबर कम आ जाएंगे या 2-3% कम आ गए एंड वी आर पैनिकिंग. आई एम अगेन आस्किंग यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर सैटिस्फाइड विद द मार्क्स यू हैव गॉट in proportion to the effort or the focus we had for the term 1? Raise your hand. And keep yourself muted, guys. 9th class का session नहीं हो रहा, 12th pass out का session होने वाला है. Okay, we have 3 kids who are satisfied. Only 3 in the batch? Okay, 4. I repeat my question. The kids who are satisfied with 5th, Shreya says 5. Okay. Gungun is 6. Why are you guys taking so much time to raise your hand on Zoom? Yeah, have you guys lost it? Anika is 6. Okay, hands down, all of you. Now I want you to spill some beans to you, and I'm sure we have spoken this at length on so many occasions. Now I want you to understand what I'm going to tell you. Please focus. I want you to understand and be very honest to yourself. I'm not asking you this question publicly. Answer to yourself. You know that how much chances you know now based upon your performance so far with us. What do you think is your chances for cracking JEE? Because I think परसों से full test series शुरू हो रही है. Am I right? So speaking on today, exactly 1 month away we have JEE. मैं नीट का फोकस इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज नीट इज स्टिल अ टाइम इज लेफ्ट. ठीक है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द किड्स हुज फोकस इज JEE and main, that to JEE main for now. If your preparation is in line, now I explain you what is the good preparation. For most of you, I'm saying for most of you, if you think that you can manage a score of 120, 130 sure shot in your JEE, you are definitely going to get into a good percentile and into a good college.
ठीक है. So if the answer to this question is yes sir, I'm confident that by in 1 month or so I'll polish my subjects, that I'll surely get. Obviously surely kabhi bhi nahi hota, obviously us din pe bhi bahut kuch depend karta hai, but more or less कि 1 महीना है सर मेरे पास, जेनेसिस ने 5 टेस्ट लेने हैं, अगर मैं एफर्ट डालूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, आई पॉलिश माय वीकनेसेस, फुल टेस्ट, एंड आई एम श्योरली आई गेट दैट काइंड ऑफ अ रेंज. अगर मैं अपनी सेंसेस में कर दूंगा, दैट्स अ मिनिमम आई एम सेइंग, then I think your focus should remain JEE. Number one. Number two, for a medical student, I would be very honest, I would want you guys to completely focus on your term 2 for next few days or so. I'm not saying complete focus, I think it should be 65 term 2, 35 on NEET. जो overlapping portion है term 2 का, उसके आप parallelly objective भी कर सकते हो. ठीक है. Probably this is just this next is for 5 minutes, this 2 minutes, next 2 minutes for NEET kids जिनका NEET goal है that for next probably 10 days more till March end, keep on focusing on your NEET. So probably from 5th or 7th of April switch on to this board thing, term 2 thing. Maybe अगर board की तैयारी ठीक है तो you can extend it till 10th April also, 10-15 April also, because 7 मई में बहुत time है. Now the kids whose focus is that they're clear that they clear, listen to me, they were clear that JEE is not their target, और दूसरी एक और कंडीशन है, अंगूर खट्टे हो चुके हैं, means you feel now JEE is out of range, it cannot be cracked, you have scored by cheating or somehow by hook or by crook. Teachers might not know it, your conscience knows it, that if you will give JEE, you'll not score more than 70, 75, 80. My humble request to you is that now at least start spending 50% of time of your day on term 2 and remaining 50% of your self-study time on JEE. Eventually, if you, and also, I'm so sorry to put it this way, or I'm so proud to put it this way, always remember that if अगर अभी तक नहीं हुआ, give up नहीं करना, but थोड़ा सा अपने करियर को लेके selfish and sensible होना जरूरी है. I repeat, if you feel that you're into dooms when it comes to JEE, बैंडा बजा पड़ा है. ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, जितना मैंने आपके स्कोर्स देखे हैं, जितना I take the feedback from the teachers, ऐसे कम बच्चे हैं, but still if you feel so मेरे बच्चे, then focus upon term 2 equally. I'm saying equally till JEE exam. Then probably जो last 10-12 दिन होंगे, 25 अप्रैल से 26 अप्रैल से 7 मई तक के जो 10-12 दिन होंगे, उसमें कुत्ता माफिक बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, पूरा देश करेगा. So you have time. I'll be very honest with you, all of you have got a lot of time in your plate. So the problem is that you guys are not understanding how do you utilize that time. Because बहुत सारे बच्चे, देखो, you are not coming, most of you are not coming except Excel batch के maximum बच्चे, not all of them also. Maximum of them are still coming for these subjective tests also, जो हो रहे हैं. Most of you are missing them. क्यों मिस कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं. क्या प्लान कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं. ठीक है, किसको सी बना रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं. ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाई यू. देखो, धीरे धीरे एज द टाइम विल प्रोग्रेस, मेरा हक तुम पे कम हो जाएगा. ठीक है, आई कांट विद दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी, आई कांट टेल यू गाइस यू हैव टू कम अप फॉर द टेस्ट, आई विल नॉट टॉक टू यू. वो पुरानी बातें थी, अच्छी लगती थी, बट gradually I also accept the fact that you guys have too grown up now for your understanding. आप बहुत mature हो गए हो, your friends help you take the decisions. हमारा रोल आपकी लाइफ में अब it's about to get over. ठीक है, but जो बच्चे मुझे सुनते हैं, जो मुझे आज भी मानते हैं, and who feel that we have given unconditionally to you, don't miss these tests. हमने बहुत क्लियरली आपको बोला, सर ने आपको क्लियरली बोला, टेस्ट देने आना जरूरी है, 0 भी नंबर आएगा कोई इश्यू नहीं है. वी वांट यू टू हैव दैट एक्सपोजर ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम, मोर द बेटर. ठीक है, चलो
Now, having said that, now it again leave it to your discretion whether you will come or not. But now listen to me. But जो भी JEE के aspirants हैं, anyone who's appearing for JEE, he or she should not miss any test for JEE full syllabus starting from day after tomorrow. पहला test day after tomorrow है. Yes, sir. You cannot afford to miss that test. If you remember, when I met you guys personally, depending upon which branch you're coming in, January, May, when these test series were about to begin, I told you very categorically that bros and girls, part test is warm up. असली performance full test से मैं आपको बता पाऊंगा आपको क्या percentile आएगा. So now that movement, वो luckily या unluckily कह लो, JEE postpone हो गया, तो जो part test खत्म हुए और full शुरू हो रहे हैं, उनके बीच में there is a gap. There was a lot of gap, if you see, है ना? Now, from day after tomorrow, you must come for the test. Also, when you're coming for the test, I have seen, I'm sorry to put it this way, but I'm being very honest, I have seen miracles happening. I'm saying actual miracles happening to the kids who believe in them. Why do miracles don't happen much? Abhinav Rawat, can you answer this? Sir, self-belief नहीं होता अपने अंदर. क्या बोला अभिनव ने? सुना नहीं. I'm so sorry बेटा, तू क्लियर नहीं बोला. Sir, अपने अंदर confidence नहीं होता. Okay, Tanishka, what do you say? Why do miracles happen less? So constant effort नहीं रहता, एक टाइम पे give up हो जाता है. No. What do you say, Ishan Kumar? Sir, lack of self-belief. In one line, I'll say this way: miracles इसलिए कम होने शुरू हो गए because लोग miracles में believe कम करने लग गए. You got to believe it to make it happen. And when I say miracle, I'll explain you what miracle is. A positive miracle would mean someone not scoring well in all these tests end up scoring great. I'm not saying great, end up getting into the dream college. मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे का केस बताया था, ईशान बहल का. Yes, sir. Yes, sir. मैंने शेयर किया था ना आपके साथ, सबके साथ किया था कि किसी एक दो बच्चों के साथ किया था? कुछ याद है किसी को यार? Who attends my all my sessions? I think Geet attends. वो प्रोडक्शन साइंस वाला है क्या? वो प्रोडक्शन साइंस वाला हाँ, जिसकी पेक में हो गई थी. हाँ, वो लास्ट राउंड तक बैठा रहा था. लास्ट सेशन में मैंने बताया था ना आपको. So the ones who missed it, there was a guy who we trained, very average guy, was very clear. Miraculously, he's in PEC right now, enjoying his first year of college. We did not believe in him, trust me. मतलब ऐसा नहीं कभी सोचा था कि PEC में हो जाएगा. He's starting in PEC, and there were a couple of others who we believe will get into that PEC but could not because of their stupidity also and all that stuff. So my advice to you as your best friend is hang in till the last day of your counseling. You will get through. You got to just hang in for the longest period of time. Am I making sense? Yes, sir. Now, when I say hang in, Yes, sir. now listen to me. When I say hang in, what I actually mean by hanging in? Evaluate and analyze your term one performance. See what went wrong in subject like English. Most of you, a lot of you have sent me your results also personally. I was saying most of you have goofed up in English. I'll come to the solution of that also. Okay? In the last part of the segment. A lot of you have goofed up in English, especially the ones who were not attending Divya's classes. Okay? Most of you. Okay? चलो, जो अच्छे बच्चे थे उनका स्कोर 32, 33 पे गिर गया है, वो एक 31, 30 काफी बच्चों ने मुझे भेजा स्कोर, which is a sign of serious worry. But having said that, now what should be the game plan? The game plan should be you got to put 8 to 9 hours every day of self-study now.
How many of you are doing an 8-hour self-study every day presently? Okay, 6 hours, 6 hours. So guys, the ones who are doing less than 4 hours, please raise your hand. The ones who are doing less than 4 hours. No one. It means a lot of you are lying. So it's okay. I trust you, but it's okay. Now the ones who are putting 6 hours, I'll come to 8 hours a bit later. The ones who are putting 6 hours every day, do somehow take it to 7 from tomorrow itself. Maybe 30 minutes morning में बढ़ा दो, 30 minutes evening में बढ़ा दो, या 30 minutes late night बढ़ा दो. Take it to 7 hours. Make sense? Now, if you're a JEE aspirant, most of you are, for that matter, most of you are. Now, how you should go about it? If you remember, I hope by now you have polished your 15-20% of the syllabus. जो part test में छोड़ा था. Have you? First is यार एक तो videos पता नहीं तुम क्यों on नहीं करते. I don't understand what is the problem with you guys? You are not switching on your videos. एक चीज बताता हूं, आज देख रहे हो, धीरे धीरे देखने के लिए तरस जाओगे. अभी इतने इतने लंबे लंबे मैसेज आते हैं मुझे पुराने बच्चों के, भेजूंगा तुम्हें. अभी देख रहा हूं शक्ल और दिखा दो अपनी शक्ल भी. Once you will be in the college, you will miss me so badly you don't even imagine. अभी हूं ना मैं तुम्हारी लाइफ में इसलिए. Okay, सुनो. Now, if you first take it to 7 hours, 8 वाले को you need to play smart. Less than 5 is not going to work for you. Now, when I say how do you utilize your time wisely? Who is Vishal Sharma? So Vishal Sharma to sir, sorry. Okay, when I say utilize your time wisely, now if we are taking 5 mocks in for example in next 1 month or so, you also have to appear for at least 3 to 4 at your own end, preferably a paper which has already come into JEE. Sorry. Make sense? Number 1. Number 2, what are the JEE timings? 9 to 12 sir morning और शाम 9 को to 2 से 12 5. or 2 to 5. Now answer me with a lot of honesty, guys. I trust you don't lie. How many of you know the question, how many of you are in your complete active mode every day at 9 a.m.? Complete active mode. You're sitting like the way I am sitting on your table chair with your notes in front of you at sharp 9 a.m. Raise your hands. Let's see who is the most honest kid in the batch. Ishan Walia is 1, Mihir is 2, Ravinder is 3. I repeat my question. How many of you are active at sharp 9 a.m. sitting in front of your systems or whatever it is? Great. Now the ones who are not doing it, hands down, load on your hands. Load on your hands, guys. Is my internet unstable? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, Just give me 30 seconds. I'm switching from one Wi-Fi to another. Give me 30 seconds. 30 seconds के लिए connection lose हो सकता है, guys. You have to be patient. Let me change my place. Is it stable now? Guys, is it stable? Guys, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Is it stable now? Yes, sir. Okay, now understand. Now, okay, Ayan, you want to ask something? Yes, sir. Sir, I Bolo. want to tell something. Sir, this Tell- year it's 3 to 6 in the evening. Sorry? Sir, शाम को 3 to 6 है अब
Yes, sir. Okay, and सुबह 9 to 12 है? Yes, sir. Okay, now listen to me. अभी किसी के अभी we have not got the timings कि आपका पेपर कब है, am I right? किसी को टाइमिंग तो नहीं आया अभी? Now No. I don't care how you do it. Listen to me. I don't care how you do it. You need to ensure that every day for the next 30 days, I repeat, all the aspirants, every day for the next 30 days, come what may, you should be in your peak concentration between these two time zones. हम 5 टेस्ट इस टाइम जोन्स में रख भी देंगे मिक्स एंड मैच करके, बट 30 डेज की कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे. Now for that to happen, now listen to me, you got to change. If you, ये मैं 2 साल से बात बोल रहा हूँ, बट अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया. For this to happen, you can't afford to sleep at 3 a.m. or 4 a.m. or 2 a.m. You know what will happen? You want to know what will happen? तुम मेरे कहने पे 9 बजे टेबल चेयर पे बैठ भी जाओगे, चलो मान लिया तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, यू ट्रस्ट मी, ओके यू डू इट. तुम सो रहे हो 3-4 बजे, तुम 8 साढ़े 8 उठ के बिना नहाए धोए बैठ भी गए, सर ने बोला था, टेबल चेयर पे बैठ के काम करना शुरू कर दिया. Your mind will be in a state of a complete shock, or you know the state when you get up in the morning when your 7-8 hours of sleep has not been completed. You can't expect to solve a mathematics question or a physics numerical, or you can't afford to remember a reaction from your NCERT directly जो पेपर में पूछी गई है, if your mind is have not slept for 7-8 hours. Change your cycles. Now presently your cycle should be, for next 1 month should be, best cycle should be 11 p.m. to 7 p.m. sorry a.m. Worst case scenario 12 a.m. to 8 a.m. That's it. But why I'm preferring is 11 to 7. Listen to me. Once we follow the cycle, once we make, I'll tell you today how to make the cycle also in reality from today onwards. Just stay back until the end. If you are sleeping at 11, you're getting up at 7, even if you have an exam, जिसका center 9 बजे अगर पहुंचना है, एग्जाम 9 बजे अगर एग्जाम है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, you got to reach there at 8:15, 8:30. 45 minutes पहले, 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करवाते हैं वो जेई में. Now if you have to travel to a place like Mohali, Laladu, Derabasi, जहां पे सेंटर जनरली बनते हैं, now what are you going to do? You will either travel 1 day before and stay at a hotel or a relative place, or you will travel in the morning. Now if you have to reach at 8:15, you will definitely restart from your home if the center is far, 6:37. Am I right? If you do, imagine तुम पेपर है तुम्हारा सुबह जेई का 9 बजे, और तुम रात को 3 बजे तक दीवारें देख रहे हो, नींद नहीं आ रही, क्या करेंगे? You sleep at 3, you get up at 6, you get up at 6:30, you're traveling, you reach at 8:15, you are in your examination hall by 8:30, exam is at 9. You have already exhausted your resources. You have lost the battle there only. Half of you have lost the battle there only. No matter how much we have trained you, no matter how much I love you, no matter how much I've inspired you over these years, 50% of the battle has already been lost and has been given to a competitor who has slept well. You don't make routines in a day. You make it in a month. The month begins now. There is a reason this session has been kept on 21st of March. That's why it said attendance compulsory, because I knew it's going to be an important one. Ignore my hair. Look at what I'm trying to say. This is serious, guys. I have seen kids. When I say miracles, I've seen kids, brilliant kids, goofing up, not sleeping one night before it, not sleeping one night before. पूरी रात ऐसे जाग के अगले दिन पेपर देने चले गए. Do you think so? They'll be 100% productive. And तुम्हें क्या लगता है? What time you sleep, Gungun? Honestly, beta? Sir, 1 o'clock. Honestly? 1 o'clock. Honestly? Sir, 1 o'clock. Ayan?
सर 12 और 1 के बीच में. Pratik, Sir, 4:35. in the morning, na? Yes, sir. Okay. Geet, 1 o'clock. Prachi, Sir, 12:30. Shreya Tiwari. Sir, 12 to 1 के बीच में. You got to push, all of you, most of you are sleeping between 12 to 1. Pratik is an exception. Pratik, if you get a morning shift, you know क्या होने वाला है तेरे साथ? Yes, sir. Change now. Now. All of you are sleeping between 12 to 1. Ensure that, listen to me carefully. You guys have to listen to me now. You stop using your mobiles beyond 10 p.m. every night. मोबाइल दूर होगा, नींद टाइम पे आएगी. आज स्ट्रगल करोगे कोई इशू नहीं है. मेरी बात ध्यान सुनो. देखो क्या करना है. अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है सुनो आज से. Come what may, I repeat, come what may, tomorrow morning, whatever time you're sleeping today, irrespective of that, get up fuckingly at 7:30 a.m. I repeat, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में, आज आप रात को कितने बजे भी सो, कल सुबह 7:30 बजे हम ग्रुप पे अटेंडेंस लेंगे. एंड अगर कोई बच्चा वो ग्रुप पे अटेंडेंस देके दोबारा सोएगा, वो जेई का उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा. मेरा श्राप है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे श्राप लग जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स. अटेंडेंस डन है. 7:30 we'll start with Ishan Walia will be the first one to say present sir, yeah, up sir, followed by Jashanpreet, because these two guys are early risers. I'm sure I know them. Rest will follow. Ishan Walia 7:30 will knock it off sir, up. Jashanpreet, if you are in this, Jashanpreet, are you there in the session? Ayan Gautam, is Jashanpreet in the session? No, sir. I saw him. I saw him. Okay, just inform Ayan. Ayan, usko bata dena. And followed by all of you, all 28, 29 of you, whatever is it. 7:30, we are going a roll call. I'll also be up, though my schedule does not allow me because I am a late bloomer. But that's okay. I'll get up for you tomorrow. Done? We'll do it for. Okay, we'll do it. We're not doing it for just one day. We'll do it for 7 consecutive days. And Ishan Walia is going to lead this one. Why? Because he's an early riser. He goes to bed at early morning. Sir, मैं 7:30 घर नहीं होता. 7:30 कहाँ होता सुबह तू? सर मैं पार्क होता हूँ उस टाइम पे. किसके साथ? मम्मा पापा? नहीं सर, अकेले होता हूँ. तो मतलब मोबाइल ले लियो ना. नेट ही नहीं होएगा. मम्मा को बोल दो 7:30 बजे मैसेज डाल देंगे ग्रुप पे, ईशान इज अप. बोल दूंगा. ठीक है? यस सर. Okay, you what time you go to bed, Ishan? सर 10:30. That's be like Ishan. वो आती नहीं memes. Ishan wakes up in time. Ishan sleeps early. Ishan barely uses social media. Ishan does not have a crush. Ishan does not brush. Ishan does not use Instagram. Be like Ishan. That way, he's absolutely doing the right thing. Imagine 10:30 सो रहा है, 2 साल से मुझे पता है यही रूटीन है उसका, जितना मुझे को याद है. He's getting up at, Ishan, what time? 4:30 से 5 के बीच में. So he's crazy. Don't like the Ishan. 4:35 is too early. But somewhere be up around 6:37. But okay, let's start from 7:30 a.m. Make sense? Guys, this is serious. Yes, sir. Imagine a kid like Pratik going into an exam at 9 a.m. sitting in the exam. He will not be productive. We believe he can score 100 percentile, but if he is not productive, will not score 100 percentile. You can't reproduce a reaction of inorganic or name of inorganic or a salt of inorganic if you're not in your peak concentration. Full concentration से भी inorganic नहीं होती है. Half दिमाग से कैसे करोगे? दोनों टाइम घर पे 9 से 12 और 3 से 6 की विंडो में कोशिश करो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है. 3 से 6 I know all of you can do it. 9 से 12 is most of you don't do it. Am I right? कल से करेंगे.
डू समथिंग, मतलब कल के लिए आज रात को देखो, टेबल चेयर पे, जहां भी टेबल चेयर पे हमने पहले एक बैनर भी लगाया था, जो शायद लगा होगा, कईयों ने शायद लोहड़ी में जला दिया होगा या होली पे उसकी पिचकारी बना ली होगी, बट इफ यू हैव दैट बैनर व्हिच वी पेस्टेड ऑन द वॉल ऑन द टेबल, उस टेबल पे आज रात को रख के सोना कि सुबह 9 से 12 में क्या पढ़ना है, मे बी 2 books, मे बी अ पेपर, मे बी अ सैंपल पेपर, मे बी अ न्यूमेरिकल शीट, maybe a book, numerical books, maybe TMH, whatever it is, maybe a biology worksheet. I want you to listen to him. Am I making sense? ताकि सुबह उठें तो डिसीजन ये ना हो क्या पढ़ना है. I want you to be at your table studying at sharp 9 o'clock. Now for the next few days, since most of you would put an effort, listen to me guys, don't compromise upon your chemistry for a single day also. Fix up a window for 2.5 hours every day in 2 slots. Listen to me. 2.5 hours every day in 2 slots, 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 days. You will only do dash. Chemistry. And what in chemistry? Organic chemistry. NCRTs, read it thoroughly, solve back questions, ma'am ke notes saath rakho, read them, send, solve PYQ. Even if you have done PYQs, solve them again. 2.5 hours a day chemistry will take you to a good college. Make sense? I've seen kids scoring 19 chemistry, another 13 total are in good college. Imagine. Miracle करने के लिए थोड़ा smartly खेलना पड़ेगा. केमिस्ट्री दिल पे पत्थर रख के हो सकती है, करोगे तो आ जाएगी. फिजिक्स मैथ्स अगर 2 साल नहीं किया, आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर लाइक मे बी मॉडर्न फिजिक्स, मे बी अ चैप्टर लाइक सॉलिड्स. उसके अलावा मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं मैकेनिक्स नहीं आती है तो 1 महीने में आ जाएगी, नहीं आएगी. जो आता है वही आएगा. प्रैक्टिकल बनो. केमिस्ट्री करोगे 1 महीना 2.5 घंटे रोज दोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं है. 2.5 घंटे रोज इंटू 30 दिन कर लो, कितने बने? 75 घंटे बने. 75 घंटे केमिस्ट्री कम से कम निकालनी पड़ेगी. मेक सेंस? ओके, अभी तक आप सबकी एग्जाम को लेके स्ट्रैटेजी बन गई होगी. हैव यू डन द एनालिसिस ऑफ थॉरो एनालिसिस ऑफ 7 टेस्ट? Raise your hands, the kids who are very confident, sir. 7 tests are complete in my control. एक question is in my control. तो ये जी मेरा फोन ला दो प्लीज वहां से, उस वाले कैबिन में पड़ा हुआ. How many of you are very confident about the approximately the 700 questions which 630 questions which you faced in the 7 part test by Genesis? No one? मैंने बोला था बेटा. चलो कोई बात नहीं. 2.5 घंटे केमिस्ट्री, 2.5 घंटे फिजिक्स, 2.5 घंटे मैथ्स, ये क्लियर होना चाहिए. केमिस्ट्री में तुम्हें बता दिया क्या पढ़ना है, अभी बताया तो है. Yes, sir. फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, जल्दी बताओ. Notes plus PYQs. Notes plus PYQ. Please ensure that you're solving questions and you're also analyzing them side by side. Make sense? Matlab, I feel if my wisdom would be right, 10-12 क्वेश्चन बहुत आसान आने वाले हैं फिजिक्स में इस बार. बहुत आसान. बहुत आसान का मतलब, you know the formula, you put the values, the answer is done. I swear upon God. I'm sorry, मतलब मेरी इंट्यूशन है और जनरली मेरे एग्जाम्स को लेके इंट्यूशन सही रहती है. मैथ्स would be धुआंधार. So let's have realistic targets with each other. Mathematics, I'm not giving you any target, but when you're putting 2.5 hours a day, listen to me, focus upon improving your selection of a question. The worst case scenario, even if you choose 8 right questions, 8 easy one which can be done in 20-25 minutes, and you do it 8 correct, I'm saying for most of you, not all of you, few of you, we are targeting that you'll get 99 percentile above. उनके लिए different game है, but for most of you, I want you to focus upon at least 8. 12 in physics,
8 in maths, 16, 17 correct questions in chemistry. This becomes 16, 24, 36. 36 into 4, 144. You would get into good college. Make sense? Make sense? Yes, sir. Now, when I Yes, say how sir. do you shut up? When I say how do you improve selection, listen to me. How do you improve selection? Listen to me. How do you improve selection? I'm sure sir ने बताया होगा, but मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ. Math selection. Now, if I have a practice test 1, I've done it, I've given it, I know it, I've analyzed it. Sir has discussed it question by question. Now, I'll see that test and I'll try कि मुझे इसको दोबारा attempt करना है. For example, what will be the first few questions which I'll pick up in first 20 minutes to be solved? Only maths. Maybe 4, maybe 5. Only 4, 5. In first 20 minutes, which I'm sure I'll crack it. Then what will be the questions I'll choose in the next 20 minutes or 30 minutes for? इधर देखो. Break your one. देखो, इतना clear है. 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा मैथ्स को देना चाहिए. ये clear है? ये तो clear है. Approximately 1 घंटा देना चाहिए फिजिक्स को. 50 मिनट देने हैं केमिस्ट्री को. ये सबको क्लियर है? ये रूल नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट है और आपका रिजल्ट बेटर आ रहा है तो उसको फॉलो करो, मेरे को फॉलो मत करना. मेक सेंस? आई एम सेइंग 1 hour 10 minutes maths, 1 hour physics, 50 minutes chemistry. For example, if we follow this, now if this is to be followed from tomorrow on, sorry, from day after tomorrow, I'll divide my mathematics portion of 70 minutes, only mathematics portion of 70 minutes, into probably 3 time zones. Make sense? 25 minutes, 35 minutes, last 10 minutes. First 25 minutes, जो definitely मेरे से निकलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन मैक्स, जो definitely निकलेंगे. Next 35 minutes, वो क्वेश्चन जिनके लिए मैं थोड़ा डाइसी हूँ, but if I give an effort of probably 6 minutes per question, then I can solve 6 more. 35 by 6, simple. And last 10 minutes, खुदा ने अगर रहमत बरसी, तो मैं शायद 1-2 बोनस क्वेश्चन निकाल दूं जो मेरे से नहीं निकल रहा, तो मे बी आई कैन क्लिक. Physics 20 and 30 का barrier. First 20 minutes straight forward, था 3-4-5 क्वेश्चन, and next 30 minutes जिन पे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, but I know I can crack it. Make sense? And chemistry is as simple. I know. I think I don't have to give you advice. Either you know it or you don't know it. Make sense? सारा गेम सिलेक्शन को इंप्रूव करने पे लगाओ, स्पीड को बढ़ाने पे लगाओ, और इंश्योर करो घर पे, if you are increasing the speed, the accuracy is not getting compromised. I repeat, and you know how you do it? How do you do it? Anyone? How do you do it? How do you practice increasing speed? जल्दी बोलो. सर टाइम में लगा के क्वेश्चंस करना. Time bound questions practice. Sorry? That's an old Time advice. bound. That's an old advice. That's तो वो तो मैं बचपन से दे रहा हूँ. Listen to me, I'm giving you advice now. तभी मैंने बोला सेशन इंपॉर्टेंट है. जो भी पेपर तुम घर पे दोगे मॉक टेस्ट फुल, उसके लिए तुम अपने आप को 2.5 घंटे दोगे. घंटे? कितने घंटे? ओ 2.5 घंटे. अब 2.5 घंटे देने के लिए टोटल 30 मिनट कम हो गए, तो हर सेक्शन से 10-10 मिनट कम कर लो. मैथ्स 1 hour, फिजिक्स 40 मिनट्स, केमिस्ट्री 30 मिनट्स. 30 बजी 40 जितनी बची 30 40 व्हाटएवर इट इज. हाँ सॉरी, मैथ्स 1 hour, फिजिक्स, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? Physics को 50 देने सर. फिजिक्स को 50 सॉरी, एंड केमिस्ट्री 40. एम आई राइट? Yes sir. दैट्स द ब्रेकअप ऑफ 150 मिनट्स. कब से? कहां पे? जहां अभी हो, एक्सेप्ट जो बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं. मेक सेंस?
what will happen? Day one, when you'll do it at your home, you'll panic. You will try कि सर कोई बात नहीं, साहिल तो पागल है, मैं तो 3 घंटे दूंगा. साहिल पागल है, वो सब जानते हैं, बट 2.5 घंटे पे रुक जाएगी घड़ी. 70 नंबर आएंगे, 60 आएंगे, 160 आएंगे, कोई फर्क नहीं है. ग्रेजुअली अगर तुम 5-6 पेपर घर पे 2.5 घंटे में कर गए, तुम अपने आप को सरप्राइज कर दोगे जेई वाले दिन, पॉजिटिवली. Then I'll take a guru dakshina from you with a beautiful gift. सर जो अभी तक करते 2.5 घंटे में आ रहे हैं, जिन्होंने क्या सारे बेटा? पेपर सारे पेपर सर अभी 2.5 घंटे में मुकाए हैं, 3 घंटे लगे नहीं किसी पेपर. हाँ, तो वो इसका मतलब उनको पेपर की तैयारी कम है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की. जेई का पेपर कैन नॉट बी सॉल्व इन लेस देन 3 years. क्योंकि आपके जैसा बच्चा इसलिए कर सकता है बिकॉज आप मैथ करते नहीं हो ईशान. जिस दिन आप मैथ ढंग से करना शुरू कर दोगे, 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता है. फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2.5 घंटे लगा के हीरो बनना कोई फायदेमंद नहीं है. यू आर नॉट गिविंग एनी एफर्ट टू मैथ्स. मेक सेंस? गर्ल्स, आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Girls, are you with me? Yes, sir. And boys, are you with me? I was about to ask boys, are you with the girls? Boys, are you with me? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Awesome. So this is as far as what to do. How to do? एक महीने के लिए तो फेंक दो इसको. किसने इसको बहुत लिमिटेड कर दिया, इसके यूजेज को लिमिटेड कर दिया? Brilliant, good job. The best part about you guys is that you guys are so honest to me. जो बच्चे नहीं भी लिमिटेड कर पाए हैं, they are honest to me. I love you guys. I'll always love you. Okay, अब लिमिटेड कर दो बेटा. Limited का मतलब how do you define limited? I would say at this point of time, that's the maximum in a day. Hours की बात कर रहे हो, maximum 7.5 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे दिन में सोना है, 2 घंटे मोबाइल यूज करना है. कितने हो गए? 7.5, 8, 15.5, 2.5, 17.5 घंटे हो. 4, 4.5, 5 घंटे रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है. प्रॉब्ली अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक द किड्स आर साइक्लिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट जॉब. एंड 1-2 घंटे वैसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता. मेक सेंस? किसी भी टाइम जोन में 9 से 12 वाले में और 3 से 6 वाले में मोबाइल साथ नहीं होना चाहिए. अनलेस आप मोबाइल से देख के सैंपल पेपर कर रहे हो, वो अलग बात, या प्रैक्टिस पेपर करो तब अलग बात है. बट देन इंश्योर दैट यू आर नॉट स्विचिंग द स्क्रीन्स. मतलब इंश्योर दैट देयर इज नो व्हाट्सएप इन बिटवीन, देयर इज नो इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, देयर इज नो स्नैपचैट, देयर इज नो स्ट्रीक्स हैपनिंग. नथिंग इज हैपनिंग. Nothing. I mean it. Nothing. I have no YouTube notification that he has uploaded the video and आपको अंदर चुल मच जाए, एक देखूं कैसे स्टार्ट की है वीडियो, I'll come back to the test. वो नहीं चलेगा. Make sense? करेंगे? Okay. Now I'm opening the house for questions. You can ask me anything. Any concern you have, anything which you feel that you need my support in any form whatsoever. बताओ. सर अगर जो बच्चे सब्जेक्टिव नहीं देना चाहते सर, फोर्स ना करा जाए सर. ये रिक्वेस्ट है सर. अगर कोई We are not forcing anyone, bro. We are not forcing anyone. किसी के घर पे फोन हुआ सब्जेक्टिव में सोने पे? मेरे घर सर. Who अभी बोल called? रहा सर. सुंदर सर रात को कॉल आया 10 बजे सर. किसका फायदा है? तो ठीक है सर. अब सर वो आपने वो देखी सर, डेट शीट देखी है उसकी बोर्ड की? एक हफ्ते की छुट्टी है सर, उसमें 2 बार सिलेबस कर दूं मैं. कौन चाहता है कि उसके घर फोन ना हो फॉर सब्जेक्टिव पेपर? मैं सर को मना कर दूंगा. ईशान कुमार, I'll tell सर ईशान को फोन ना करो. Anyone else guys? पर ईशान तू पढ़ रहा है घर पे बेटा? यस सर. Can I trust you? पूरा. You will not break my trust? तोड़ा सर आज तक? क्या? आज तक तोड़ा है सर कभी? नहीं. फिर
चल गुड, मैं सर को बोल दूंगा इसको मेंस देने दो। और कोई? गुड। इसके अलावा गाइस एनीथिंग? घर पे पढ़ रहे हो बैठ के जो पढ़ रहे हैं? 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी यस सर। क्या करते हो? खेलने चला जाता हूँ सुबह। जिम चलता है सर। करो यार 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, बैडमिंटन वगैरह खेल लो, वो मतलब कुछ तो करो, साइकिलिंग कर लो, वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, कुछ तो करो यार, घर पे मत बैठो। बहुत अगला 1 महीना क्रूशियल है मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल स्टेट सही रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। When will the crash course for NEET start? अभी तो है टाइम बेटा, अभी तो नीट से पहले होगा बच्चे, वो तो अभी तो टाइम है खुशी। ओके सर। बेटा नीट की डेट आएगी तभी करेंगे ना, नीट की डेट आने वाली है 1-2 दिन में। आई एम एक्सपेक्टिंग 2 या 3 दिन में नीट की डेट आ जाएगी। फिर बताऊंगा ना बेटा, फिर सारी टेस्ट सीरीज के तेरे को सारे प्लान दे दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ लिसन टू मी। देखो, यू दिस इज क्रूशियल टाइम, गिव योर बेस्ट। हाँ तो अगर प्रैक्टिकल है तो बेटा सुबह शाम तुम्हारे को टेस्ट शेड्यूल आ गया, मतलब टेस्ट डेट्स आ गई हैं फुल? नहीं, टाइमिंग्स भी आ गई। नहीं सर, डेट्स आई हैं, टाइमिंग नहीं है। पहला टेस्ट परसों है ना? हाँ जी यस सर। सर। तो अगर आपके प्री बोर्ड्स के साथ टेस्ट सीरीज क्लैश होगी तो मैं ऐसा कर लेंगे, आप टेस्ट दूसरी शिफ्ट में दे देना। प्री बोर्ड्स हैं क्या? यस सर। वो कहने के चल रहे हैं सर। किस किस के स्कूल में प्री बोर्ड चलेंगे बेटा टेस्ट सीरीज के साथ साथ, जो हमारी टेस्ट सीरीज है? सर हमारा सिर्फ परसों क्लास हुआ। एक क्लैश मारेगा सर। तो आई थिंक अनिका, मिहिर, गुनगुन कह रही है एक ही क्रैश है और किसी का नहीं है। अनिका फिर आप एक बार मैसेज लगा देना किसी भी टीचर को, वो आपको मे बी गुंजन मैम को कर देना, वो आपके ऊपर नीचे का शॉट दे देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप भी कर देना अगर आपको। देखो टेस्ट मिस मत करना और कोशिश कर लेना कि टेस्ट शांति में बैठ के देना, बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज। किस पे दोगे, मोबाइल पे कि लैपटॉप पे? लैपटॉप। कोशिश करना यार, अगर लैपटॉप अरेंज हो सके तो लैपटॉप पे देना, मतलब वही एक्सपीरियंस आएगा जो एक्चुअली होता है। मेक सेंस? आई थिंक मुझे इतनी बातें करनी थी। गाइस प्लीज स्टे पॉजिटिव, इवन इफ यू हैव नॉट वर्कड हार्ड, इट्स ओके। मतलब it's not okay, but we cannot go back in the past and change it. There would be regrets. I'm sure few of you would have regrets that if I would have studied, I would have been definitely in a better space of mind. Had I not wasted my 11th class in YouTubing, in PUBG, in whatever it is, I would have been in a better space. But it's okay. You can't change it. You still have 30 odd days. Let's make it count. अगर 7.5 घंटे रोज पढ़ते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 225 घंटे हैं। तुम्हारे और जेई के बीच में 225 घंटे, सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 225 घंटे सेल्फ स्टडी के। और सोचा जाए तो करने बैठोगे तो 80 घंटे 75 घंटे पर सब्जेक्ट बन रहा है 75 घंटे पर सब्जेक्ट। लॉट कैन बी डन। लाश मत बनो, जोश में रहो। आधी गेम बॉडी लैंग्वेज की है। क्लियर है? टर्म 2 को इग्नोर मत करो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी रियलाइज नहीं होगा, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू बेटा। यू कैन टेक आउट टाइम, अ बिट ऑफ टाइम टू इंश्योर दैट यू आर इन हंट। ऐसा ना हो अभी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर अगर लाइन चेंज करनी है, किसी और कॉलेज में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कुछ और करना चाहते हो, बोर्ड्स बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं है। 10th के बोर्ड्स नहीं है कि जो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाते हैं, जिनकी बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है। 12th के हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ये बात, ठीक है? इंग्लिश का क्रैश कोर्स वी आर स्टार्टिंग, आई थिंक नोटिफिकेशन में भेजवा दूंगा एडमिन को बोल के। नेक्स्ट ट्यूसडे ऑनवर्ड्स बोर्ड्स क्रैश कोर्स for English. Divya ma'am will take it. The ones who want to enroll obviously can come, okay? And the rest is okay. So I think I'll take your leave, guys. Stay in touch. If I'm not able to reply, I'm so sorry. I was keeping a little busy, but you can again stay in touch. But talk sense with me. मेरे को ये मैसेज नहीं आना चाहिए सर मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा।
I can't do anything to you guys. I'm so sorry. मन नहीं लग रहा तो मन मार के पढ़ो. पढ़ना ही option है. That's the easiest option for getting into the good college right now. Make sense? Yes, sir. Let's do it, guys. Let's do it for each other. Love you all. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's rock.